悪かったの。Started development immediately after Yakuza 3 and announced just 4 months after its release in July 2009, Ryuga Gotogufo Densatsu wo Tashugumono, roughly translated to Like Dragon 4, the successor to the Legend, या फिर just Yakuza 4 outside Japan, fourth main and entry है in the action-adventure beat-em-up JRPG series. Released in March 2010, Yakuza 4 एक direct continuation है Yakuza 3 के gameplay and some of the story elements का. And unlike previous games in the series, Yakuza 4 काफ़ी different है in its story and gameplay approach, but other aspects में काफ़ी similar, which is understandable because ये Yakuza 3 के almost a year after launch हुआ था. And इतने वक्त में गेम की fundamentals को change करना while at the same time developing new content and assets pretty much impossible है. So it is more of the same but with some big changes. And because of that, it was a bit confusing on how should I approach this review. क्या मुझे entire game के बारे में बात करनी चाहिए with explaining everything या फिर just all the new content and changes? And I think I'll go with the second option since मैंने अपनी Yakuza review में all the new changes and things को काफ़ी अच्छे से explain किया था. So I suggest you to watch that video first. Now, Yakuza 4 itself इस series में काफ़ी strange entry है. It feels like a middle ground and it might actually be, seeing the release of Yakuza 5 and how much content that game has. Yakuza 4 सीरीज़ के फॉर्मूला को चेंज करने की कोशिश करता है with everything being bigger and overarching narrative, bigger and extended Kamurocho, bigger cast of characters, bigger side stories, and Yakuza 4 overall more over the top है compared to previous games, even in its main story. We start the game as Shun Akiyama, the owner of Sky Finance, एक finance company with 0% interest and no collateral policy. काश ऐसी finance company and policy real world में होती. Would have helped a lot of people. Out of all 4 playable characters, Akiyama सबसे different है. He's not a Yakuza or a cop, but just a businessman. Not your average one, but still. Akiyama एक काफ़ी chill and laid back character है. So much so कि at times इस attitude की वजह से उसे कई problems face करनी पड़ती है. But with his intellect and natural fighting abilities, वो अपनी problems को काफ़ी effectively dispose करने में कामयाब होता है. I absolutely love this character. Out of all the new character, Akiyama definitely best one hai. I mean, he's just way too cool. With chill and relaxing demeanor, which shines in every cutscene he is in. And because of that, starting the game with him was definitely the best choice. Gameplay-wise, like always, Yakuza 4 एक third-person action-adventure beat-em-up है with JRPG mechanics. Compared to the previous games, one playable character, Yakuza 4 में 4 different playable characters हैं. With all of them having different fighting styles with different skills and skill trees, जिन्हें players combat के through experience point gain करके upgrade कर सकते हैं by unlocking new fighting moves, and health and heat being upgraded passively while leveling up. ये upgrade system much better है compared to Yakuza 3, जिसमें players को both heat and vitality को अलग से upgrade करना होता है. The overall combat itself is now much more fluid, fast-paced and fun है, with all of the jank from Yakuza 3 being cleared up. And with 4 different playable characters, it's far from being boring. हमारा फर्स्ट प्लेबल कैरेक्टर है आकियामा, जिसकी फाइटिंग स्टाइल लूजली बेस्ड है टाइकोंडो पर, विद रैपिड किक्स एंड पावरफुल फिनिशिंग मूव्स एंड टॉन्ट्स टू फिल अप हीट बार एंड हीट मूव्स जो कॉम्बैट में आकियामा की केयर फ्री एंड रिलैक्स पर्सनैलिटी को काफ़ी अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं. समथिंग आई कैन से फॉर ऑल प्लेबल कैरेक्टर्स. याकुजा 4 की स्टोरी 5 पार्ट्स में डिवाइड है, विद ईच पार्ट हैविंग 4 चैप्टर्स. ईच पार्ट में हम डिफरेंट कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से खेलते हैं, विद द 5th वन बीइंग फिनाले, जिसमें हम ऑल 4 प्लेबल कैरेक्टर्स के बीच स्विच कर सकते हैं. पार्ट 1 स्टार्ट्स विद आकियामा, जिसमें एक मिस्टीरियस वुमन लिली आकियामा के पास 100 मिलियन यान का लोन लेने आती है फॉर सम अननोन रीज़न. आकियामा अग्रीज बट विद वन कंडीशन. शी हैज़ टू कंप्लीट अ टेस्ट, जिसमें लिली को आकियामा के होस्टेस क्लब एलिस में 3 डेज़ में 3 मिलियन यान की सेल्स करनी होगी. द फर्स्ट हाफ ऑफ पार्ट 1 सर्व्स एज ए ट्यूटोरियल एंड कैरेक्टर स्टडी ऑफ आकियामा, जिसमें हम मैन डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हैं, लाइक फाइटिंग, होस्टेस मेकर, साइड स्टोरीज, मिनी गेम्स इफ प्लेयर्स इनमें पार्ट लेने में इंटरेस्टेड हैं, एंड रेवलेशंस, जो दिस टाइम अराउंड इवन मोर हिलेरियस हैं.
Most of the side content like Hostess Maker, Hostess Bar and minigames pretty much same as Yakuza 3 with minor changes, and some new ones like Fighter Maker for Saijima and Table Tennis, which is surprisingly fun. Fighting Coliseum and IF7R is back and both are fun to play, especially IF7R since हम all 4 characters के साथ participate कर सकते हैं and game के सारे bosses के साथ fight भी कर सकते हैं. While I love Yakuza games, I'm far from a completionist. मैं each game में सारी सब stories complete करता हूँ while playing some mini games and that's it. Because for me ये just side diversions हैं while playing the main game. So after putting all her efforts, Lily Akiyama के test को complete करती हैं and Akiyama gives her the 100 million yen. Behind the scenes, Akiyama through his investigative skills, Lily की mystery को solve करने की कोशिश करता है and finds out that she has killed 2 men. Akiyama Lily से सच पूछने की कोशिश करता है but she denies to tell. Akiyama Lily को जाने देता है because she reminds him of his ex-girlfriend. And Lily promise करती है कि एक दिन वो इस मनी को फिर से लौटाएगी. A bit later, Akiyama Elise जाता है जहाँ माजिमा फैमिली के कुछ लोग लिली को ढूंढने आते हैं. After a fun mini boss, Akiyama, the mad dog of Shimano, गोरो माजिमा से मिलता है जो लिली को कैप्चर करने नहीं बट बचाने के लिए उसे ढूंढना चाहते हैं ताकि वो 1985 में हुई उनकी गलती का पश्चाताप कर सकें. Part 2 starts in 1985 with our second playable character, Taiga Saijima, part of the Sasai family and Tojo clan, sworn brother of Majima, and brother of Yasuko Saijima, the real name of Lily. In 1985, Majima and Saijima एक hit plan करते हैं to take out their rival family in Tojo clan, ताकि Sasai family Tojo clan की ranks में ऊपर बढ़ सके. On the day of the hit, Majima Saijima की help के लिए lead हो जाता है, so Saijima carries this 2-man hit on his own. As called by others, Saijima एक freak of nature है due to his strength. वो अकेला 18 याकुजा members को मौत की घाट उतारता है in a badass scene straight out of a Quentin Tarantino movie. As the aftermath of the shootout, Saijima को death row मिलती है जहाँ वो अपने फाइल लेकर इंतजार करता है. But even after 25 years, he's still waiting for his punishment. He gets transferred to Okinawa prison जहाँ उसे पता चलता है कि the hit he did 25 years ago एक failure थी. And as its result, Sasai family completely destroy हो जाती है. And other than that, Saijima को लगता है कि उसके sworn brother Majima ने उसे potentially धोखा दिया है, as he is now one of the top dogs of Tojo clan. सच जानने के लिए साइजिमा जेल से निकलने की कोशिश करता है विद याकुजा 3 एंटागनिस्ट हामाजाकी, जो नाउ एक चेंज्ड मैन है एंड प्रिजन से भागने में उसकी हेल्प करता है एंड साइजिमा को द ड्रैगन ऑफ डोजिमा काजुमा किरयू से मिलने की सलाह देता है. इन अ बीटल स्टेट साइजिमा मॉर्निंग ग्लोरी ऑर्फनेज पहुंचता है जहां हमें एंटायर याकुजा सीरीज का मोस्ट ऑकवर्ड सीन देखने को मिलता है. 起こしてごめんね。ゆっくり休んでて。じゃあ私はおじさんに連絡してくるね。ちょっと。おじさん。Saijima is the man out of time, जो last 25 years से prison में था without any outside interaction. So seeing a woman first time in 25 years does this to a guy. Understandable, but why? Still, Saijima is not a bad person, so he doesn't do anything. Thank God.
But I think there are better ways to show this perspective of the character without making it this much weird and awkward. साइजीमा फाइनली किरयू से मिलता है, जिसमें विदाउट मच टाइम किरयू इजीली समझ जाते हैं कि साइजीमा एक याकुजा है ऑन अ डेथ रॉ. साइजीमा एक्सप्लेन्स हिमसेल्फ एंड किरयू से कामुरोचो जाने की हेल्प मांगता है ताकि वो 25 ईयर्स पहले हुए इवेंट्स की सच जान सके एंड माजिमा से अपना बदला ले सके. किरयू agrees but on one condition: the tiger of Sasai has to beat the dragon of Dojima. After an easy but fun boss fight, किरयू साजिमा को कामुरोचो पहुंचने में हेल्प करते हैं, जहां साइजीमा माजिमा से सच जानने की कोशिश करता है. सिंस साइजीमा एक वांटेड क्रिमिनल है, उसे पुलिस से बचते हुए कामुरोचो की मैनी स्ट्रीट्स को नेविगेट करना होता है, एंड दिस इज वेयर द वर्टिकलिटी ऑफ कामुरोचो कम्स. सो द ओवरऑल मैप ऑफ कामुरोचो pretty much सेम है एज याकुजा 3 but with added verticality. Now players कामुरोचो के मैनी रूफटॉप्स एंड अंडरग्राउंड एरियाज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, लाइक शॉपिंग मॉल, पार्किंग लॉट, अंडरग्राउंड सीवर सिस्टम एंड रूफटॉप्स, जिन्हें साइजीमा के पार्ट में यूज करना मैंडेड है, विच इज़ अ गुड वे टू इंट्रोड्यूस प्लेयर्स टू दीज न्यू एरियाज. कॉम्बैट वाइज साइजीमा की प्ले स्टाइल प्रो रेसलिंग से इंस्पायर्ड है, जिसमें वो अपने अपोनेंट्स को हराने के लिए रॉ स्ट्रेंथ का यूज़ करता है. हिज ओवरऑल कॉम्बैट काफ़ी सिंपल है, जो चार्जेस, हैवी अटैक्स एंड थ्रोज पर फोकस करता है. He doesn't have the flashy combos but charge attacks, जो pretty much uninterruptible हैं and deals massive damage. He can also pick up heavy objects like bikes, जो other characters के साथ यूज़ करना impossible है, and his heat moves काफ़ी raw है, showing how powerful he is compared to everyone. Overall, I like his playstyle. He's a bit lacking in move list, but he's entertaining to play due to his strength and raw heat moves. Part 3 फोकस करता है मासायोशी तानिमुरा पर, एक कॉकी कॉप with strong sense of justice, a caring nature, and strong determination. Also known as the parasite of Kamurocho due to his shady dealings, addiction to gambling, and being ignorant to his superiors. At the start of the game, Tanimura, Hirogai Arai केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, one of the supporting characters of the game, and कैसे ये केस 25 years पहले हुए साइजीमा मासिकर से कनेक्टेड है, ताकि वो अपने फादर की डेथ के पीछे का राज जान सके. वन ऑफ द कॉप्स जो साइजीमा केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे. तानिमुरा की ओवरऑल स्टोरी इन सभी डॉट्स को कनेक्ट कर अपने फादर की डेथ का सच जानने एंड रियल परपेट्रेटर्स को सामने लाने की है, वाइल ट्राइंग टू बी अ बेटर कॉप दैन एनीवन इन द सिस्टम. इन हिज क्वेस्ट वो अदर कैरेक्टर से मिलता है लाइक यासुको एंड आकियामा वाइल हेल्पिंग द पीपल ऑफ लिटिल एशिया, एक स्मॉल टाउन फॉर एशियन इमिग्रेंट्स एंड पीपल फ्रॉम अदर एशियन कंट्रीज. आउट ऑफ ऑल 4 प्लेबल कैरेक्टर्स, तानिमुरा इज़ द वन जो फर्स्ट लिटिल एशिया को एक्सेस कर सकता है ड्यू टू हिज हेरिटेज एंड हिम नोइंग मैन डिफरेंट एशियन लैंग्वेजेस. कॉम्बैट वाइज तानिमुरा की फाइटिंग स्टाइल ताइयो जुत्सु पर बेस्ड है, एक स्टैंडर्ड फाइटिंग स्टाइल यूटिलाइज बाय जापानीज पुलिस टू अरेस्ट क्रिमिनल्स इन अनआर्म्ड कॉम्बैट. ये फाइटिंग स्टाइल काउंटर्स एंड रिवर्सल्स पर बेस्ड है विद जॉइंट लॉक्स एंड अदर काउंटर टेक्निक्स. तानिमुरा की फाइटिंग स्टाइल क्राउड कंट्रोल में काफ़ी इफेक्टिव है, सिंस प्लेयर्स कैन काउंटर लिटरली एनीथिंग जस्ट बाय प्रेसिंग ब्लॉक, एंड काउंटर विंडो ऑलरेडी काफ़ी जनरस है, जिसे प्लेयर्स इवन फर्दर अपग्रेड कर सकते हैं. देयर आर 2 अपग्रेड्स इन तानिमुरा स्किल ट्री जिन्हें एज सुन एज पॉसिबल अनलॉक करना मैंडेट है. कॉमेट स्पीड, बिकॉज तानिमुरा की बेसिक कॉमेट स्पीड स्लोएस्ट है आउट ऑफ ऑल प्लेबल कैरेक्टर्स, एंड एसेंस ऑफ कॉम्बैट, जो ईच फिनिशिंग मूव के बाद एक हीट मूव ऐड करता है जो मैसिव डैमेज डीलर है, एंड इन्हें अपग्रेड भी किया जा सकता है जस्ट बाय यूजिंग दीज मूव्स इन कॉम्बैट. While Tanimura's fighting style is fun to play, it's just not for me. His movements are slow and मैं honestly counter and parry based combat में ज़्यादा interested नहीं हूँ, especially in a beat 'em up like Yakuza, जहाँ being offensive is the best defense. And tiger dropping someone is much more satisfying than just activating Ultra Instinct. Also, IF7R with Tanimura is just frustrating because players IF7R में heat moves use नहीं कर सकते हैं, जो basically इस character के most useful and fun moves हैं. So it's just a slog to play because without his heat moves, Tanimura एक काफ़ी slow character है with low damage output, and to win these matches you'll have to use cheap tactics against opponents. So Tanimura is not my kind of character, but he's still fun to play, and honestly I'm fine with that because I love his story and character. And finally, part 4 में हम the Giga Chad himself, the Alpha and Omega, the Dragon of Dojima, and बेटी के बाप किरियो काजुमा के पर्सपेक्टिव से खेलते हैं. प्लॉट वाइज किरियो सान का स्टोरी में योगदान कुछ ज़्यादा नहीं है. वो ओकिनावा में यासुको से मिलते हैं जो साइजीमा से मिलने जाती है बिफोर हिज लास्ट डे, बट हामाजाकी एंड किरियो बताते हैं कि वो ओकिनावा नहीं बट कामुरोचो में है. हामाजाकी किरियो को बताता है कि 25 ईयर्स पहले हुआ साइजीमा मासिकर, अराई केस एंड 2005 में हुए याकुजा 1 की मिसिंग 10 बिलियन यान एक साथ कनेक्टेड है.
किरयू सच जानने एंड यासुको की हेल्प करने के लिए कामुरोचो जाते हैं एंड वी फाइनली सी ऑल ऑफ आवर प्रोटैगनिस्ट टुगेदर. पार्ट 4 compared to other parts काफ़ी शॉर्ट है with Kiryu-san mostly being there to kick ass and sing karaoke. बट इस पार्ट में गेम का लॉन्गेस्ट फाइटिंग सेगमेंट भी है एंड आई एब्सोल्युटली लव इट. Kiryu-san इस गेम में मोस्टली एक बैक सीट लेते हैं एंड इज़ देयर जस्ट टू सॉल्व एवरीवन्स प्रॉब्लम. Yakuza 4 also the Dragon Ojima की स्टोरी का एक फिटिंग एंड है, even better than Yakuza 3 in my opinion, जहाँ वो अपनी मिस्टेक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं एंड ट्राइज टू मेक थिंग्स बेटर फॉर द डोजो क्लैन. एंड विद 3 न्यू प्रोटैगनिस्ट Yakuza 4 काजुमा किरियू के लिए सीरीज़ का लास्ट गेम हो सकता था एंड इट वुड हैव बीन अ गुड कंक्लूजन टू हिज स्टोरी एंड अ पासिंग द टॉर्च मोमेंट टू और न्यू प्रोटैगनिस्ट जो इस सीरीज़ को फ्यूचर में कैरी कर सकते थे. But as we know, he's still a big part of the series, with 3 more games with him being the protagonist and upcoming games like a Dragon Gaiden and Like a Dragon 8, जिसमें Kiryu second protagonist होने वाले हैं. Combat-wise, he plays pretty much the same as Yakuza 3, with some newly added moves and improvements. He's an all-rounder character with fast, hard-hitting attacks and multiple counter moves, and because of that, he is the most fun character to play as. Kiryu-san का moveset Yakuza 3 में already काफ़ी great था with all new counter moves, red heat moves and much more. And with the improvements of Yakuza 4, he's even better, जहाँ combat much faster and fluid है and without the excessive blocking. And ये हैं हमारे all 4 playable characters with different but lovable personalities and drastically different play styles. It's surprising कि कैसे RGD Studio ने एक single game में 3 new protagonists को introduce किया, उन्हें properly flesh out किया with their own unique quirks and still managed to make all of them lovable. Story wise, not all of them have equal relevance and honestly, it's a story more about Saejima and Tanimura since game का most of the plot दोनों characters के past के around resolve है and a bit of Akiyama, but in the end both Akiyama and Kiryu supporting characters की तरह feel होते हैं. While the story itself has some problems like it being convoluted and कुछ plot twists जो fan base को पसंद नहीं है, rubber bullets, and it's not as well written as previous games, but I still love it for what it is because it काफ़ी ambitious है with a lot of amazing moments and some of the plot twists मुझे bother नहीं करते, so rubber bullet is fine by me even if it is a bit dumb. Side stories are much better compared to Yakuza 3 and game में many character based side stories भी है जो each character की personality का एक great showcase है, जिनमें हमें इन characters की एक different side देखने को मिलती हैं जो main story से absent है. फॉर एग्जाम्पल आकियामा की साइड स्टोरीज फाइनेंस रिलेटेड है एंड कैसे वो अपने कस्टमर्स को फाइनेंस के लिए डिफरेंट टास्क देता है इफ़ दे वांट द लोन, बिकॉज वो लोन सिर्फ उन्हीं लोगों को देता है जो जेन्युइनली अपनी लाइफ को चेंज करने में इंटरेस्टेड है एंड इफ दे क्लियर द टेस्ट दे गेट द मनी. फॉर साइजीमा साइड स्टोरीज रिलाई करती है अ मैन आउट ऑफ टाइप कॉन्सेप्ट का, जिसमें साइजीमा कुछ ऐसी सिचुएशंस फेस करता है जिन्हें वो पूरी तरह समझ नहीं पाता ड्यू टू हिम नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड आफ्टर स्पेंडिंग 25 years इन द प्रिजन. As a cop, Tanimura की साइड स्टोरीज नेचुरली क्राइम पर फोकस करती हैं एंड फॉर Kiryu-san इट्स मोस्टली कॉलबैक्स फ्रॉम द प्रीवियस गेम्स. दिस टाइम अराउंड गेम में टोटल 62 साइड स्टोरीज हैं कंपेयर टू 119 ऑफ Yakuza 3 एंड ऑल ऑफ दीज साइड स्टोरीज आर ग्रेट, स्पेशली मल्टी चैप्टर साइड स्टोरीज फॉर ईच कैरेक्टर. Presentation wise, it's same as Yakuza 3 since basically every asset is reused. And the music is great as always, especially the character themes जो absolutely bangers हैं and each character has its own unique style of music जो उनके difference and characteristics को represent करता है. The main theme Faith इसका good example है with all 4 characters having a different rendition of the theme fitting their own unique style. But there is a confession I need to make. अपने Yakuza 3 रिव्यू में मैंने कहा था कि गेम को ओवरऑल म्यूज़िक इतना मेमोरेबल नहीं है, but I'm absolutely wrong about it. I still remember much of Yakuza 3's combat music because of how funky they are, something I definitely can't say about Yakuza 4's OST, since ये mostly jazz and rock music पर focus करता है, but it's still a really good OST. And this was Yakuza 4, एक very ambitious game in the series, जो इस entire franchise को एक new direction में लेकर जाता है. A direction with some very positive results, since the next mainline game Yakuza 5 को still to this day इस series का most ambitious game कहा जाता है, with 5 different cities to explore with 5 protagonists, and one of the best game in the series beside Yakuza 0. And if Yakuza 5 is anything like Yakuza 4 but expanded, I'm sure I'm gonna love it, and I just can't wait to play it. Until then, thanks for watching. I hope you guys loved the video, and if you did, please don't forget to like and subscribe, and have an absolutely amazing day.
Peace. 時に笑い時に迷い時に悩み共に紡ぐあなたとお前のカムロ町恋のストーリー俺の孤独な心に咲いた一輪のお前という名の雪原かネオン眩しいカムロ町二人紡いだこの歌をカムロ純恋歌と名付けよう